Hello students, now here we are going to revise the first chapter of your biology. Like the first chapter name is life process. Okay, now here we are going to revise the first chapter about the life process. Clear? We are revising here about the life process. So what have done in this life process, the topic for revision is about the nutrition. Okay, we are revising here about the nutrition. So when you are studying in first chapter about the nutrition, so you know very well the nutrition is the process of taking the nutrients from the outside. If any organism taking the nutrient from outside, so that process of ingestion of nutrients from outside is called the nutrition. Okay, and there are so many types of the nutrition in different organisms. Clear? So now here we are discussing, here we are revising about three types of the nutrition, like holozoic nutrition, saprophytic nutrition and parasitism. Now you can say here also holozoic nutrition, saprophytism and parasitism. Okay, these are other terms also here. So you must have to clear here that in holozoic nutrition what happen, in holozoic nutrition the organism take the food or nutrient from outside, and this food have to be digested inside the body. You must have to remember the organic matter which is digested and absorbed into the body, and this is called the holozoic nutrition like human animals. यानी कि holozoic nutrition में क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से अपना फूड लेकर के अपनी बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करेगा in presence of different enzymes like our body, like other animals also. But in case of saprophytism or saprophytic nutrition, what happen कि only dead and decaying organism are used for the as a food material. यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फूड होगा वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो सड़े गले हैं या जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया या फंजाई रिएक्शन करेंगे और उन पर अपना सीक्रेशन छोड़ेंगे, जिसके वजह से वो बाहर ही जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर वो बैक्टीरिया या फंजाई हैं दे विल स्टार्ट टू एब्जॉर्ब दैट डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द डेड एंड डिकेइंग बॉडी. यानी कि इट मस्ट बी क्लियर हियर दैट इन होलोजोइक न्यूट्रिशन the digestion of food occur inside the body, but here in case of the saprophytic the dead and decaying organism are destroyed, are again digested outside the body, and later they will be absorbed by saprophytic organism. Clear? So this is about the saprophytism. Okay, so in here the bacteria and fungi especially digest and destroyed the dead and decaying food material. Clear? You must have to clear here. Okay, now what happened in the case of the parasitism? In case of parasitism the living organism are used as a source of the food. यहाँ पर क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर या बाहर रह करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड लेगा. ठीक है, जैसे बहुत सारे लाइस हैं जो कि हमारे हेयर्स में हो जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम सपोज दैट हमको मलेरिया अगर होता है तो मलेरिया के केस में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम है दे विल टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर ब्लड. एंड ऑल्सो मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो दे आर द एक्सटर्नल पैरासाइट. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी से लिविंग बॉडी को नुकसान पहुंचा करके अपना फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड द पैरासाइट्स, एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द parasitism. Clear? So I am recalling here again that in case holozoic nutrition that refer the digestion of the food inside the body. Saprophytic nutrition the digestion of the dead and decaying organism outside the body by secretion of different enzymes. Okay, and in case of parasitism the food is when the organism take their food
फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय हार्मिंग देम। ओके, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 100% किसी न किसी तरह का नुकसान पहुँचता है, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द पैरासिटिज्म। क्लियर? नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस, you have to answer yourself. I think that you know very well about the heterotrophic nutrition, and still if you have any confusion then you can discuss with me. Okay, so try to answer of these questions. Clear?